हैं और बलदेव तथा सारे विष्णु अवतार उनके अंश हैं। अतः भगवान कृष्ण अपनी ज्येष्ठ स्थिति को जानते हैं और सारे विष्णु अवतार भक्तों के रूप में अपनी अपनी स्थितियों से अवगत होते हैं। And now we are going to read verse from Chaitanya Charitamrita Adilila, chapter 6, verse number 100. So we will read it. और साथ में पढ़ेंगे। Oh, we have it on the screen. It is nice. It is nice. Let's read it all together. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. 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 Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. 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 Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Please. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. कृष्णेरे समताहेते बड़े भक्त पद Krishnera samatahayate bada bhakta pada. आत्माहेते कृष्णेरे भक्त हये प्रेमास्पद Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. Mataji's. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. आत्माहेते Krishnera bhakta kaya prema spada. Krishnera samatahayate bada bhakta pada. Atmahayate Krishnera bhakta kaya prema spada. शब्दार्थ। Okay, we're going to read word by word translation. I will be reading Bengali, you will be reading Hindi. Yeah, okay. Krishnera, please. भगवान कृष्ण के साथ भगवान के साथ Samata, समता समता Haite, रहते इसकी अपेक्षा इसकी अपेक्षा Pada, बड़ा Bhakta Pada, भक्त पद Atma Haite, आत्माहेते स्वयं की अपेक्षा स्वयं की अपेक्षा Krishnera, कृष्णेरा भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण का Bhakta, भक्त भक्त Haya, है, Prema Aspada. प्रेम का पात्र। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON and BBT. Translation. The position of being a devotee is higher than that of equality with Lord Krishna, for the devotees are dear to Lord Krishna than his own self. भक्त होना भगवान कृष्ण की समता से बढ़कर है, क्योंकि भक्तगण भगवान कृष्ण को अपने से भी अधिक प्रिय हैं। Purport. The conception of oneness with the Supreme Personality of Godhead is inferior to that of eternal service to the Lord, because Lord Krishna is more affectionate to devotees than to his personal self. In Srimad Bhagavatam, verse 9.4.68, the Lord clearly says, Sadavo Hridayam Mahyam, Sadunam Hridayam Tvaham, Mad Anyatena Janati, Aham Tebhyo Mahagapi.
The devotees are my heart, and I am the heart of my devotees. My devotees don't know anyone but me. Similarly, I don't know anyone but my devotees. This is the ultimate relationship between the Lord and His devotees. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से तादात्म्य की धारणा भगवान की सनातन सेवा से निष्कृष्ट है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रिय अपने आप से भी अधिक वत्सल हैं। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने स्पष्ट किया है, साधवो हृदयमयं साधूनां हृदय तत्त्वम् मध्यन्ते न जानति नाहं तेभ्यो मनागपि। भक्तगण मेरे हृदय हैं और मैं भक्तों का हृदय हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और इसी प्रकार मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। यही है भगवान और उनके भक्तों के बीच का घनिष्ठ संबंध। Shri Chaitanya Mano Krishna Stavitam Yena Bhutale Svaya Rupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhya Eva Cha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So here in this chapter, Shri Advaita Acharya is glorified like exemplary devotee of Supreme Lord. So यहाँ पे अद्वैत आचार्य इस अध्याय में जो है एक अच्छे भक्त की तरह जो है गुणगान करे भगवान चैतन्य महाप्रभु का। And in this, you open this chapter. Chapter 6, verse 86. In the chapter 6, verse 86, it was before, he says about his own self-identification. What is my self-identification? 86. So 86 श्लोक में जो है बता रहे हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। तो अपने असली स्थिति बता रहे हैं अद्वैत आचार्य। So he repeats here again and again, I'm a servant of Lord Chaitanya, servant of Lord Chaitanya, I'm a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. और यहाँ पे वो बार-बार दोहरा रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ और उनके दासों का दास हूँ। And also in the verse 92, you can find that Krishnadas Kaviraj, he mentions that Advaita Acharya is always engaged in devotional service with his thoughts, words and actions. और 12वें श्लोक में जो है बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान कृष्ण की वो सेवा में, भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हमेशा अद्वैत आचार्य लगे रहते हैं। So it is called Yukta Vairagya. What we have, we can use in service to Supreme Lord. Yukta Vairagya, real renunciation. असली वैराग युक्त वैराग है कि हर वस्तु जो हमारे है वो हम भगवान की सेवा में लगाएं। First of all, the principle number 1, it is mentioned in Shri Ishapanishad, Ishavasi Nadam Sarvam Yatkincha Jagatim Jagat, Tenam Jitha Magritha Hasis Vidana, means he is proprietor, supreme proprietor. Everything belongs to Krishna. Krishna is the supreme, he is cause of all causes. भगवान कृष्ण सर्व कारण है, जैसा ईश्वर उपनिषद के पहला श्लोक में बताया है कि सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण से अवतरित होती हैं, भगवान कृष्ण की ही हैं। And of course, there is an opposite feeling which is called the sense of false proprietorship. It is one of the elements of materialistic mentality, materialistic mindset, the feeling or the sense of false proprietorship. तो ये जो भाव की ये वस्तु मेरी है, ये जो है इस भौतिक संसार की मानसिकता है। It is mine, it is my money, it is my property, or even these people are mine, people are mine. तो ये माया है कि ये धन,
ये संपदा, ये और ये भी कि ये लोग मेरे हैं, ये सब जो है माया है। First of all, we can start from the understanding that all people and all living entities actually belongs to Krishna. They never can be mine, they never can be ours. तो हमें सबसे पहले शुरू करना चाहिए, कोई भी जीवात्मा मेरी नहीं है, वो सब कृष्ण की है। Otherwise, if we deny the freedom of other living entities, the moment will come when other living entities will deny our freedom. तो अगर हम जो है दूसरे जीवात्माओं की स्वतंत्रता को बंद करेंगे, तो एक समय आएगा कि और जीवात्माएं हमारी भी स्वतंत्रता को जो है रोकेंगे। And usually, when the war starts in any country, usually the government has these feelings that you, citizens, you are actually ours. That's why you have to go to war, you have to fight, because you are ours. You belong to this particular state. तो किसी भी देश में युद्ध जब शुरू होता है, तो वहाँ की जो शासनकर्ता है, जो गवर्नमेंट है, वो ये सोचती है कि आप लोगों को युद्ध करने जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है ये सारे लोग हमारे हैं, इस ज़मीन पे पैदा हुए हैं, तो आप सबको युद्ध पे जाना चाहिए। You belong to us, so let us decide what will be your destiny, how you will be slaughtered on the war. तो क्योंकि आप हमारे हो और हम ही जो है डिसीजन लेंगे कि कैसे आपकी मृत्यु होनी है। So, and then the question comes, who is our real and ultimate master? फिर प्रश्न उठता है कि हमारे परम स्वामी हैं कौन? And if we solve this quiz, who is our real master, then our life will be really happy, because our supreme master is not about to exploit us, he is about to take care of us if we perform devotional service. अगर हम इस बुद्धि, इस पहेली को सुलझाने कि हमारे परम स्वामी कौन है, तो फिर हमें जो है फिर से जन्म नहीं लेना होगा संसार में। To those who are performing devotional service, he is acting as Bhakta Vatsala, means he takes care of his devotees. तो हमें उसके लिए भक्ति करनी होगी, और भक्ति करके, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है हमारा ध्यान रखते हैं, भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है। So it is point number one, that everything belongs to Krishna, and the conclusion from this is if everything belongs to Krishna, let me use this for Krishna. तो हमें इससे शुरुआत करनी होगी कि हर चीज़ जो है भगवान कृष्ण की है, और उसको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। And moreover, if I not just accept that Krishna is supreme, but I have some kind of feeling, some kind of, like we say, love and devotion, then it is not that I say myself that let me do something for Krishna, but I'm happy to do something for Krishna. अगर हमारे पास ये अभी भाव नहीं है कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, तो कम से कम इतना हम करें कि मैं कुछ कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, इतना ही बहुत अच्छा है। And then this intention to do something nice for Krishna, it becomes itself, it becomes the source of my happiness. तो कृष्ण के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, यही जो है मेरे लिए प्रेरणा बनेगा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। But this understanding that it is nice to serve Krishna, this understanding doesn't belong to material world. और मैं भी इससे खुशी मेरे को मिलेगी, और ये जो भाव है इस भौतिक संसार का नहीं है। And that's why we're saying Pramanda Pramite Pona Bhagavanjila, Krishna Guru Prasada Paya, Bhakti Lata Dija, spiritual master, he gives this Bhakti Dija, Bhakti Lata Dija, or he gives this desire and this understanding that it is nice to serve Krishna. तो गुरु जो है हमारे हृदय में ये भाव देते हैं कि कृष्ण को सेवा करना चाहिए। And Advaita Acharya, this chapter is about Advaita Acharya. He understands how it is nice and how it is important to serve Krishna, how natural it is. तो अद्वैताचार्य इस अध्याय में जो है इसी चीज़ को समझा रहे हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है भगवान चैतन्य महाप्रभु को सेवा करना। So when there is spiritual experience, when there is some kind of spiritual taste, even the little spiritual taste, what to speak about Advaita Acharya, of course he has great spiritual taste. When it is, then when people who have spiritual taste, when they are just looking on those who are lacking this spiritual taste, they feel compassion. तो हमें जब ये आध्यात्मिक रस प्राप्त होगा, और फिर हमें आध्यात्मिक रुचि मिलेगी, और फिर जो है हमें आनंद मिलेगा। It is the nature of compassion.
I see that someone is lacking something, and I understand how it is uncomfortable and unpleasing to live without this, and how unnatural it is. So, and it creates the desire in my heart that let me give this benefit to other people. तो जब ये होगा तो फिर हम दूसरों के ऊपर भी दया करेंगे, और ये इसी चीज़ की प्रवृत्ति है कि हम दूसरों पे दया करके दूसरों का भी उद्धार करना चाहते हैं. There is mundane charity, for example, when people they give food to others, and it is quite easy to understand because well, everyone can understand how it is that this feeling to be hungry is not pleasing. Everyone understands this, so people they give food. तो जो ये समझता है कि भूखा रहना बड़ा कष्ट है, तो वो दूसरे को देते हैं, तभी तो है जो है दूसरों को हम दया कर पाएंगे. Or they construct hospitals and dharmashalas because it is also quite easy to understand that there is difference when you live in flat and there is difference when you live under pond, under bridge on the street. There is difference. तो अस्पताल भी बनाए जाते हैं, और फर्क है कि हम जो है किसी अच्छे मकान में रहें या फिर एक ब्रिज के नीचे रहें. But the highest charity is to promote congregational chanting of holy names of Krishna. तो ये इस प्रकार के कई सारे जो हैं लोगों पे दया की जाती है, पर उससे भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दया का, वो है हरि नाम का प्रचार करना. But because this taste to chant holy names and this taste to serve Krishna that don't belong to this spiritual world, because of that, time to time, different powerful personalities they have to come to this world in order to establish religious principles. भक्ति का भाव और हरिनाम में रुचि जो है इस भौतिक संसार की नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है. तो इसलिए समय समय पे जो है शक्तिमान आचार्य प्रकट होते हैं इस धराधाम पे, जिससे इसका प्रचार कर सकें. And if we will analyze the preaching strategy, Srila Prabhupada's preaching strategy, we will see that the essence, the core of this preaching strategy is chanting of the holy names. He started from this, he was continuing with this, and it goes through, it is the foundation of everything that we are doing actually. श्रील प्रभुपाद जी की अगर प्रचार की रणनीति को भी हम देखें तो वो आधारित है हरिनाम प्रचार पे. हम कोई भी गतिविधि हम करते हैं प्रभुपाद जी ने हमें दी है, उस सब में आधार क्या है? हरिनाम. So Advaita Acharya, he was asking Sri Chaitanya Mahaprabhu to come to this world, and he came just because of this request of his devotee. तो चैतन्य महाप्रभु को जो है अनुरोध किया अद्वैत आचार्य ने, और उनके भक्त के अनुरोध पे श्री चैतन्य महाप्रभु जो है यहाँ पे प्रकट हुए. So here in today's purport it is written that these relationships between Krishna and his devotees can be really close relationships. इस तात्पर्य में भी श्लोक के बताया गया है जो भगवान और भक्त का जो संबंध होता है वो बहुत घनिष्ठ होता है. Like in the very end of 6th chapter of Bhagavad Gita, we can find the description of the highest yogi. अध्याय 6 भगवद गीता के अंत में जो हम प्राप्त करते हैं कि एक योगी की सर्वोच्च स्थिति क्या है. Yoginam apisarvisham madgatananta atmana shradhavan vajjatayamam sameyuktatamapataha. So in this verse, Krishna says that one who practices bhakti yoga, he has the most closest relationships with me. I am situated in him and he is situated in me. तो इस श्लोक में गीता के बताया गया है कि ऐसा जो भक्त जो मेरी भक्ति करता है वो सबसे प्रिय है मेरे को, और वो मेरे में स्थित है और मैं उसमें स्थित हूँ. Means they are united in their desires. और इसका अर्थ ये है कि उनके जो इच्छाएं हैं उसमें वो एकाग्र है. Advaita Acharya wanted Sri Chaitanya Mahaprabhu to come to this material world in order to re-establish religious principles, and Sri Chaitanya Mahaprabhu also had some reasons to come to this material world, so it was going all together. तो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करना चाहते थे अद्वैत आचार्य, जिससे धर्म की स्थापना वो कर सके, और अद्वैत आचार्य भी किसी कुछ
रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रकट हुए थे। So devotees are really connected with Supreme Lord Shri Krishna, and in eyes of Uttamadhikari, actually each and every living entity is connected to Krishna. तो हर एक जीव आत्मा जो है भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। That's all, short translation. Very short. Gotcha. Okay, so in the eyes of Uttamadhikari, everyone is devotee. Just some of these devotees, they just forgot that they are devotees, and other they remember. तो उत्तम अधिकारी की नजर में जो है हर जीवात्मा भक्त है। For example, in Russia we had we had Nagar Sankirtan once on one of the central streets of one city. रशिया में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रास्ता होता है चौराहा, उसमें एक बार हरिनाम संकीर्तन किया। And one woman came, and she was in anxiety, and she was trying to start a quarrel here during Nagar Sankirtan. तो एक महिला वहाँ पे आई और फिर वहाँ पे आके जो है झगड़ा करना चाह रही थी। And we had one devotee who is some kind of, how we call it, Avadhuta style. Avadhuta style. तो वहाँ पे एक डिवोटी थे हमारे, क्या उन्हें वो जैसे अवधूत समझते हैं हम, अवधूत की तरह उनका चरित्र था। So he just approached this woman, and he told, "I love you." वो जो अवधूत भक्त थे वो उस महिला को जाके बोले कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। And then after a few seconds, because this woman was quite shocked, he told, "Do you want to know why?" तो वो महिला से पूछे आपको पता है क्यों? Do you want to know why? And she told, "Why?" तो वो पूछी क्यों? And he told, "Because Krishna loves you." तो वो बोले भक्त की उन महिला से क्योंकि कृष्ण आपको बहुत प्रेम करते हैं। It is nice that in ISKCON we have such experts who are able quickly to make people free from this mental platform, you know. तो अच्छा है हमारे ISKCON में ऐसे कुछ भक्त हैं जो लोगों को भौतिक स्तर से उठा देते हैं। Because when we are on mental platform, usually we are disturbed by the different things. जब हम भौतिक स्तर पे रहते हैं तो हमारी चेतना दूसरी रहती है और परेशान रहते हैं। Means what? What does it mean to be on mental platform? It means a bhavo, a manda, se manodharma. It is from Antya-lila of Chaitanya Charitamrita. It means that mind always creates these ideas that it is good and it is bad. मनस्थिति में भौतिक संसार की स्थिति में रहने में, मानसिक स्थिति में रहने से क्या हम सोचते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है। And the more mind is active, the more such ideas one has in his mind and brain, and the more one is eagerly wants something material or laments that he lost something. जितना ही व्यक्ति इस भौतिक चेतना में है उतना ही सोचता है कि मन में कुछ ना कुछ सोचता रहता है। He wants eagerly something that he wants to get, and he वो laments. चाहता है कुछ प्राप्त करना चाहता है और कुछ चीज़ अगर उसके लिए छूट जाती है तो उसके लिए रोता है। And actually one can easily live the whole life in his mind, even without any connection with reality, just to live in this mental dimension, that it is good, it is bad, here I lament and there I am joyful. तो कुछ लोग पूरा जीवन जो है इसी मानसिक स्थिति में जो है बिता देते हैं, ये अच्छा है बुरा है। So what devotee is trying to do, he is trying to understand what Krishna wants from him. What are Krishna's desires? तो एक भक्त जो है अपना जीवन जो है इस तरीके से जीता है कि कृष्ण की क्या इच्छा है। Because this mental platform, a balo, a manda, se manodharma, these ideas, this is good, this is bad, there is particular how to say, there is particular way how conditioned living entity considers something to be good
and something to be bad. There is particular way how it works. There is particular way of thinking. तो बद जीवात्मा सोचती ये अच्छा है ये बुरा है, इस सोच विचार करने का एक तरीका होता है उसका। And this particular way of thinking, it is very simple. One has a plan how I'm going to enjoy this material life. So in that way, this classification automatically goes on in one's mind. That it is good because it facilitates my sense enjoyment, and that is bad because it works like obstacle. तो जो चीज़ मेरी इंद्रिय में सुविधा देती है वो अच्छा है, जो बाधा देती है वो बुरा है, ऐसे सोचता है। So the essence is the material desires of the living entity. तो ये जो है भौतिक इच्छाएं हैं जीवात्मा की। But we can, first of all, we can get some knowledge about Krishna's desires. तो हमें सबसे पहले भगवान की इच्छाओं के बारे में जानना पड़ेगा। And it will make us free from our own lamentation, our own grief. और ये जो है हमको हमारे दुख से, हमारे कष्टों से निकालेगा। But it doesn't mean that we become free from any emotions. Of course, some anxieties will be there, but these anxieties will be spiritual anxieties connected with Krishna. हाँ, ये हमें पूर्णतः तो नहीं संतुष्ट कर देगा, बट कुछ ना कुछ चिंता तो रहेगी, पर हाँ हमें जो है इससे धीरे धीरे निकाल देगा। And the answer on the question how we can understand what Krishna wants from us, the answer on this question is very simple. Just approach your spiritual master and ask. तो कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, वो आप जान सकते हैं, अपने गुरु जो है उनको पूछ सकते हैं। Just get instructions, just do it, and it will be exactly what is expected from you on your particular level. तो बस अपने गुरु से पूछिए, वही जो सेवा है जो उन्हें दिया है वही हमारे लिए नियुक्त है, हम उसको करना है। And if to speak about all these numerous instructions that we can get, the most important, according to one of the purports in Chaitanya Charitamrita, the most important is to chant holy names. और अगर हमें बहुत सारी जो है चीज़ें सुनने को मिलती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, तो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताई गई है कि हमें जो ध्यानपूर्वक जप करना है। It is really important to chant Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Very important. ये बहुत ज़रूरी है कि हम हरि नाम जप करें। It makes us free from our own mind. At least we are not so much conditioned by activities of our mind. तो ये हरि नाम जप जो है हमें अपने मन से छुटकारा दिलाता है। Of course, it is not the main effect. It is just byproduct of chanting holy names. The main effect is to revive the love for Krishna. But of course, it also makes us free from this mind which always says it is good for your sense enjoyment, it is bad for your sense enjoyment. तो मन के विचारों से हमें जो है निकलना, ये हरिनाम का पहला जो लाभ है वो नहीं है। इसका सबसे पहला लाभ जो है वो ये है कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। मन जो है हमेशा हमें कहेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। So it is life of a devotee. We just reserve some time in morning to chant our rounds, 2 hours or 2.5 or 3 hours. It depends on our speed, how do we chant, or the whole day. It also depends on practitioner. It depends on practitioner. एक साधक, एक भक्त के जीवन का क्या है, उसको कार्य क्या करना है, सुबह अपना जप करे और चाहे तो दिन भर भी जप कर सकता है, ये उसके ऊपर है। So this time is reserved for Krishna. It is recommended to switch off mobile phones and all these things, not to be distracted by anything. तो सुबह के समय हम जप करें और किसी भी जो डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल है, इन सबको बंद करके हम ध्यान पूर्वक जप। Because we have to dedicate our attention to Supreme Lord. It will be devotion in action. जब हम भगवान कृष्ण को इस तरीके से जप करेंगे तो फिर हमारा ध्यान पूरा होगा और इससे जो है भक्ति जो है हम अच्छे से कर सकेंगे। Devotion in action. Devotion in action. भक्ति एक्शन है। भक्ति एक्शन में आ जाएगी। भक्ति क्रिया से, क्रिया के द्वारा भक्ति। Bhakti kriya ke dvara bhakti. Yes.
But of course, mind will be trying to be active, and anyway he will be telling, oh, listen, this is nice for your sense of joy during japa. Listen me, this is nice for your sense of joy. तो मन जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ कहता रहेगा कि ये तुम्हारे इंद्रिय तृप्ति के लिए अच्छा है। And then when our rounds are chanted, we can do some practical devotional service. And the main question is, what Krishna wants from me? और जब हम इस स्थिति से निकलेंगे तो फिर हम सच में सोच पाएंगे कि अच्छा कृष्ण की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। To some extent, we already have got some understanding of what Krishna wants from me by taking instructions from spiritual master. कुछ हद तक जो है हम समझ चुके हैं कि कृष्ण में से क्या चाहते हैं, जैसे हमने अपने गुरु से जो है निर्देश लिया। But at the same time, we can ask devotees by whom we are surrounded. We can ask them what kind of service they expect from us. अपने साथ के भक्तों से हम पूछ सकते हैं कि वो मेरे से क्या सेवा चाहते हैं। Because supreme will is manifesting not only through Uttamadhikaris, but through other devotees also. It can be manifested. तो भगवान कृष्ण की जो इच्छा है वो केवल उत्तम अधिकारी गुरु के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य भक्तों के द्वारा भी प्रकट हो सकती है हमारे लिए। Internally, when we serve, we should serve any devotee, great devotee, small devotee, any devotee, because the principle of service is the main principle. तो The main principle of service is the main principle, so we should serve devotees of different levels. बड़ा भक्त छोटा भक्त वो मायने रखता, मेन चीज है, मेन प्रिंसिपल है कि सेवा करना। But internally we do everything for satisfaction of Srila Prabhupada and our spiritual master. और अंदरूनी तरह हम जो है भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद और गुरु की प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना सेवा करना। It is important we dedicate ourselves to these great souls. हमें जो है एक ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए अपना जीवन जो है लगा देना चाहिए। And then in that way we will be satisfied internally also. और इस तरीके से हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं भगवान की सेवा में। If we dedicate ourselves, surrender ourselves directly to Bhakti Mekha, Bhakta Sahil, and so on directly, to some simple bhaktas, simple devotees, just devotees, average devotees. We will not feel such satisfaction which we feel when we serve to the same Sahil or the same Mekha, but when we do it like our service to spiritual master and Srila Prabhupada. तो हम जब सेवा करेंगे किसी भक्त को और गुरु को करेंगे तो हमें ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा गुरु को सेवा करने या प्रभुपाद को सेवा करने। Ultimately, everything is arranged by Krishna. He is Sarva Karma Karanam, cause of all causes. तो कृष्ण के द्वारा ही सब कुछ जो है प्रतिबंधित होता है क्योंकि कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। So we do this seva and grow spiritually. Shushrushob Shradhanasya Vasudeva Katha Ruchik Syam Mahat Seva Yukra Punya Tirtha Nishevanat. We grow spiritually because in such way we do Mahat Seva. Syam Mahat Seva Yukra. We do Mahat Seva or we do great service. तो जब हम ऐसे महान भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारी कथा भगवान कृष्ण की कथा में रुचि बढ़ती है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। Great service to great souls, and Vasudeva Katkaruchik, it is the result. Just by this process of surrendering ourselves to spiritual master and to Srila Prabhupada, when we do our service, big service, small service, Vasudeva Katkaruchik, we get this taste for Krishna Katha, this taste becomes stronger. तो सेवा करना, महान भक्तों की सेवा करने से महान सेवा होती है और इससे हमें वासुदेव की कथा में रुचि आती है और चाहे हम छोटी सेवा करें बड़ी सेवा करें उससे जो है हमें आनंद प्राप्त होगा और भक्ति में आगे बढ़ेंगे और कथा में रुचि आएगी। It is the principle to whom we serve, the qualities of these people we get. जिस व्यक्ति की हम सेवा करते हैं उस व्यक्ति के गुण हमारे अंदर आते हैं। So just by doing small things, for example, we are asked by our TP to sweep the floor or to wash something.
by doing this, but by doing this for Srila Prabhupada's satisfaction and for spiritual master satisfaction, we can have we can have unexpected, for some people it can be unexpected effect that we will get more taste for reading Srila Prabhupada's books. तो अगर हम छोटी सेवा करें, बड़ी सेवा करें, अगर हमारे मंदिर के अधिकारी कह रहे हैं कि पौछा मारो, तो फिर हमें जो है पता भी नहीं लगेगा, पर जो है हमारे को प्रभुपाद की किताबें पढ़ने में बहुत रुचि आने लगेगी. And no one can, from mundane scientists, no one can prove that there is a link, that there is action and consequence, that one thing depends on other. And that because you were sweeping the floor, you get the taste for reading Srila Prabhupada's books. From point of view of materialistic science, it cannot be proved. But it is so because it is spiritual, transcendental, metaphysical process. तो कोई भी विज्ञान जो है इस भौतिक संसार का इस चीज़ को नहीं समझा सकता कि आप यहाँ पे पौछा मारो और उससे जो है आपको किताब पढ़ने में रुचि आ जाएगी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये आध्यात्मिक है. So mundane scientists, they cannot prove it, well, our process, what we are practicing, bhakti process, is based on teachings that we get from Shri Guru Parampara. तो वैज्ञानिक जो है इस चीज़ को नहीं सिद्ध कर सकते, और जो हमें सारी जो आज्ञा मिल रही है वो सब हमें गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रही है. Something you can prove by mundane science, materialistic science, something you really cannot prove. हम कुछ चीज़ें जो है वैज्ञानिक के तौर पे स्थापित कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकते. For example, sometimes we say that when we chant holy names of Krishna, Supreme Lord Shri Krishna is dancing on your tongue. जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम हरिनाम जप करते हैं तो भगवान राधा कृष्ण जो है हमारी जीवा पे जो है नृत्य करते हैं. And of course, Supreme Lord is not visible in on our tongue. So the scientists, they can say, where is Krishna? We don't see him. तो जैसे हम ये बोलेंगे तो विज्ञानी कहेंगे तुम जब जप कर रहे हो तो राधा कृष्ण तो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसे कैसे, तो वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को. And some parts of this knowledge can be proved. For example, we have these 4 imperfections of conditioned living entities, and one of these imperfections is that our senses are not perfect, and it can be easily proved by some scientific experiments or even just by practical experience of our day-to-day life. हम कुछ चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि हमारे में 4 त्रुटियां हैं. पहली त्रुटि क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, और विज्ञान जो है इस त्रुटियों को जो है बता सकता है. For example, our vision is not perfect. We can see some objects, but when these objects are far away from us, we cannot see it. But it doesn't mean that these objects don't exist just because we don't see it. जैसे दृष्टि की बात करें तो कोई वस्तु बहुत दूर हो तो हमें नहीं दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे है नहीं. Some people, they follow such logic. There is no God because no one has seen him. तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है क्योंकि किसी ने भी उनको देखा नहीं. Like we have this, in Russia we have this joke, like in school a teacher is telling to the schoolmates, did you see God? And they say, no one has seen. And then this teacher says that it means there is no God. You translate, it is not the end of a joke. It is not the end of a joke. रूस में एक जो है मजाक है, चुटकुला है कि एक बार एक अध्यापक ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या तुमने भगवान देखा है, किसी ने भगवान देखा है, तो कहते नहीं, किसी ने नहीं देखा. तो वो कहता है अध्यापक कि देखो इसलिए भगवान नहीं है. And then one schoolmate, and his name is Vovochka. Vovochka is a small form of this Russian name Vladimir Putin. So this joke is not about Vladimir Putin. We're not about to joke about Vladimir Putin. It is dangerous, of course. We're not going to joke about him. I'm just saying that the full name of this
school name is Vladimir, but the small name is Vovochka. तो बच्चे का जो नाम है वो बोबोचिका है, वैसे उसका पूरा नाम व्लादिमीर होता है। Yeah. So he stands up and he asks the schoolmates, "Have you seen the brain of our teacher?" तो वो खड़ा होता है और अपने सहपाठियों से पूछता है कि क्या तुमने हमारे अध्यापक का दिमाग देखा है? And then the schoolmates they say no, and then this Vovochka says it means she has no brain. तो बोबोचिका बोलता है नहीं देखा ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी ना बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो समझ नहीं सकते। So when in 1961 we went to Cosmos. We went to Cosmos, right? To Cosmos. The first cosmonaut. Yeah, the first cosmonaut from USSR. रूस से सबसे पहला जो एस्ट्रोनॉट था वो जो है 61. Not satellite. I mean living person. He came to the cosmos. Huh? 1961. Yeah. 1961 में पहला रूस से जो आदमी जो है जो अंतरिक्ष में गया था उसके बारे में बताया। So the ruler of the Soviet Union, he asked this cosmonaut, "Have you seen God in this space?" तो जो रूस का उस समय जो शासक था उसने उस कॉस्मोनॉट से पूछा कि क्या तुमने भगवान को अंतरिक्ष में देखा? And later on, this ruler, this politician, he was using this argument that our cosmonaut he haven't seen God in this space. It means he doesn't exist. तो वो जो शासक था वो ये सिद्ध करना चाह रहा था इस बात से कि क्योंकि हमारे कॉस्मोनॉट ने अंतरिक्ष में भगवान को नहीं देखा इसलिए भगवान नहीं होते। So some people they follow this logic, but as you can see, this logic is what to say, is defect logic. तो ये तथ्य कुछ लोग मानते हैं पर इस तथ्य में जो है कोई सिद्धांत नहीं है, त्रुटि है इसमें। Something you are able to see, something you are not able to see. We are able to hear sounds on some distance, but if I will be sitting here and giving class here, and you will be sitting in east of Kailash, then likely you will not be able to hear the class. I mean, without internet. तो कुछ चीज़ें हम सुन सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं सुन सकते, कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जो है इस वक्त कैलाश मंदिर में क्लास दे रहा हूँ, आप मेरे को नहीं सुन पाओगे, तो इसका मतलब मैं क्लास नहीं दे रहा क्या? तो हाँ, बिना इंटरनेट के नहीं सुन पाएंगे। So the essence is that this knowledge which we get through Sri Guru Parampara, some aspects can be proved scientifically and some aspects should be just accepted because it is given by Sri Guru Parampara. तो हमें जो ज्ञान विज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से मिल रहा है, कुछ चीज़ों को हम जो है स्थापित कर सकते हैं विज्ञान के द्वारा और कुछ को नहीं। Because it is based on very simple point that it is not that we have seen everything and it is not that we are able to see everything. तो सिद्धांत क्या है कि हम जो है it is not that we have seen everything तो and हमने it is not that we are able to see everything. और हम ऐसा जरूरी है कि हम उसको देख सकेंगे। So it is called achintya. Achintya means unconceivable. अचिंत्य, इसको क्या कहते हैं? अचिंत्य, जिस चीज़ को हम नहीं जान पाएंगे अपनी त्रुटि इंद्रिय जो अपूर्ण इंद्रियां उसके द्वारा। And some part of this knowledge is really unconceivable. और जो ये विज्ञान है अध्यात्म का, इसको जो है हम पूर्णतः नहीं समझ पाएंगे, ये अचिंत्य है। Krishna himself is unconceivable. One of his names is Adokshaja. Adokshaja means he is unconceivable for gross material senses. तो भगवान कृष्ण को हम पूर्णतः नहीं जान सकते, उनका नाम अदोक्षज है कि हम वो जो है इस इंद्रियों पे पड़े हैं। So it is mindset of a devotee that devotee is conscious that it is not that he is able to understand everything. तो He is conscious about his limitations. भक्त जो है अपनी अपूर्णता को समझता है, वो जानता है कि वो पूर्णतः कृष्ण को नहीं जान पाएगा। And he knows that he is limited, but at the same time he knows that Krishna is unlimited. So it creates the enthusiasm, the
the inspiration, let me serve to this unlimited Supreme Personality. तो भक्त अपनी स्थिति को समझता है कि वो जो है सीमित है, पर वो ये जानता है कि फिर भी मैं सीमित स्थिति में रह के भगवान कृष्ण जो कि अनंत हैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। He is unlimited, he is Trikalagya, he knows past, present and future. भगवान कृष्ण जो है असीमित हैं और त्रिकालज्ञ हैं, वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। Moreover, he knows this about each and every living entity. और वो भी हर एक जीवात्मा के बारे में जानते हैं। We don't know our own future, we don't know future of living entities around us, and we don't know our past life. We usually don't remember our past lives. ना ही हम अपना भविष्य जानते हैं, ना ही दूसरी जीवात्मा का भविष्य जानते हैं, और अपना पिछला जीवन भी नहीं जानते। What to speak about knowing past lives of other living entities? तो क्या ही बात करें कि दूसरी जीवात्माओं का पिछला जीवन जान सकेंगे। And even about present, we can easily forget what we did one day before, 2 days before, 15 minutes ago. अगर हम आज ही की बात करें कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम एक दिन पहले क्या करा, 15 मिनट पहले क्या किया। Especially when one becomes old. जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब। So we are conditioned by these things, by material body. Material body conditions us. तो हम इस भौतिक शरीर की वजह से जो है बंद हैं। So Krishna says, not Krishna, it is said in Vedic Shastras, Tamasima Jyotirgama, तो शास्त्र बताते हैं तमसमा ज्योतिर्गमय, which means get out from darkness and go to the light. इसका अर्थ है कि हम अंधकार से निकले और जो है ज्योति में आए। And light, it doesn't mean the effulgence of impersonal Brahman, ultimately it means Krishna. इसका अर्थ ये नहीं कि हम ब्रह्म ज्योति में जाएं, इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करें। There is always light, according to Bhagavad Gita. There is always light in spiritual kingdom, and the spiritual kingdom is not illuminated by fire or by electricity, so you don't have to pay for electricity. भगवद गीता के अनुसार आध्यात्मिक जगत में जो है हमेशा रोशनी रहती है, वहाँ पे आग जलाने की या किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे हमें जो है बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। In his classes, Srila Prabhupada, sometimes he was mentioning, let's go to spiritual world back, and you don't have to pay these bills for electricity. प्रभुपाद जी अपने व्याख्यान में कई बार बताते हैं कि जो है हम सब चलते हैं आध्यात्मिक जगत, वहाँ पे तुम सबको ये बिल देने की कोई जरूरत नहीं है। Let's go to spiritual world and let's follow the supreme will of supreme personality of Godhead. तो चलिए हम सब चलते हैं आध्यात्मिक जगत और भगवान की इच्छाओं को जो है भगवान के निर्देश को पालन करते हैं। It is the essence of devotion, the desire to know what Krishna wants from me and the desire to follow these desires. ये भक्ति का सार है कि हम भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें और उसको जिए। Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We have some questions. Please ask the questions. आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Everything is clear. सब कुछ स्पष्ट है आपको। Thank you, Guruji, for the very nice class. Hare Krishna. You gave one point that usually the ruler or the country executive thinks that all the people who are living in this country belong to me, and I can use them. Maybe not directed to him, but to the state. Yeah, to the state. But in the context of India, Bharat, we see that many places, fascinating places are preserved in this holy land. So if we don't have good policies, government policies, then it may happen in future that it becomes very difficult to run these places. Yeah. So, Yes. what is your say on this? Translation. मेरा प्रश्न है कि गुरुजी ने बहुत अच्छा बताया, प्रभुपाद जी भी से बताते हैं कि जितने जनता है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ऐसी सोच गलत है। लेकिन
भारतवर्ष में देखते हैं कि बहुत सारे पास टाइम प्लेसेस हैं भगवान के, और इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि पास टाइम प्लेसेस को प्रिजर्व किया जाए, और ये डिपेंड करता है सरकार की पॉलिसीज के ऊपर। अगर हम सरकार को इधर किनार कर दें तो हो सकता है ये पास टाइम प्लेसेस ना रहें। तो इसको कैसे डिवोशनल कंटेक्स्ट में कैसे समझाएं? Well, according to Srila Prabhupada's books, ideally the rulers and the politicians should be people, kings or whatever, should be people who are Krishna conscious. तो शास्त्र या श्री प्रभुपाद जी के अनुसार जो है जो भी राजा जो है राज कर रहे हैं वो सब भक्त होने चाहिए और शास्त्र के अनुसार जो है जीवन जीना चाहिए। Well, of course we live in Kali Yuga, so we cannot expect that it will be so. Maybe somewhere for some time it will be so, but generally it is not. But anyway, the ideal is such. पर क्योंकि हम कलयुग में हैं तो हम इस चीज़ की आशा नहीं कर सकते। कहीं हो सकता है ऐसा, कहीं नहीं हो सकता। And if to speak about Krishna consciousness, one of the aspects of Krishna consciousness is mentioned in Bhagavad Gita verse 5.29, the formula of peace. तो भगवद गीता की बात करें तो अध्याय 5:29 में जो है शांति फॉर्मूला के बारे में शांति के फॉर्मूला की बात करी कही गई है। Bhaktagram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Sukridam Sarva Utanam or Yatvam Shanti. Yatvam Shanti Vichhati. So the position of Supreme Personality of Godhead is described here, and one of the aspects is that he is Sarva Loka Maheshwaram. Everything belongs to him. All lokas or planets and demigods and living entities of course also belongs to him. तो इस श्लोक में जो है भगवान की स्थिति बताई कि सारी जीवात्मा सारे ब्रह्मांड जो भगवान कृष्ण को भी जो है बिलोंग करते हैं। So Srila Prabhupada in his purport he writes that when someone is trying to imitate these three aspects of Supreme Personality of Godhead, that he is proprietor, he is well-wisher of everyone, and that all tapasas and yagas are meant for him, then this peace, this tranquility in the world decreases. तो जब कोई व्यक्ति संसार में भगवान कृष्ण के गुणों को कि भगवान जो है सारे चीज़ों के अधिष्ठाता हैं, सर्वलोक महेश्वर हैं, सुहृद हैं, तो ये कोई जो है नकल करता है तो इसकी वजह से जो है इस संसार में जो है शांति घटती है। So it is nice when a ruler has some kind of religious consciousness, when he understands that he is not the highest person, that he is not the ultimate proprietor of what he has around him. तो एक जो शासक है उसमें जो है थोड़ा बहुत धर्म होना चाहिए कि वो जो है सारी चीज़ों का जो है मालिक नहीं है। And in that sense, it is good, it is good if this politician is, for example, Muslim or Christian or whatever, if these religious beliefs helps him to act in such a way that something belongs to him, but he is not ultimate proprietor. तो चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म का हो, पर उसके अंदर अगर ये चेतना है कि जो भी चीज़ है मेरे पास, पर ये मेरे को मेरी नहीं है। But if to compare these two situations, the first situation was about war and the second was about how to control the activities in particular district and politicians they have to control. These situations are different because in case of war there is violence. And in example which you gave, there is no violence. So I was just mainly speaking that this false proprietorship sometimes can lead to violence. If it doesn't lead, then it is not so big trouble for others. तो मैं दो चीज़ों के बारे में बता रहा था, एक युद्ध के बारे में जिसमें जो है हिंसा होती है और दूसरा की शासन करना। तो जो है ये चेतना रखना कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ सही नहीं, ये सही दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण को बिलोंग करता है। If this feeling of proprietorship helps one to be responsible in his actions, then it is even good. तो अगर कोई व्यक्ति ये समझे कि मैं जो है इस चीज़ का स्वामी नहीं हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छी चेतना है।
At the same time, if there is no understanding that there is supreme proprietor, and we are not supreme proprietors, if there is no such understanding, it means it is ignorance, it is avidya. तो अगर हम यही नहीं मानते कि कोई परम भगवान है जो कि सारी चीज़ों के मालिक हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। But if this ignorance doesn't lead to violence to other living entities, then well, just through their politician he remains in this avidya, in this ignorance. So what to do? We can feed him prasadam, for example. तो अगर वो कोई पॉलिटिशियन इस अविद्या में है कि वो जो है सारी चीज़ों का मालिक है, तो हम क्या कर सकते हैं? बट हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम उनको जाके एटलीस्ट प्रसाद दे सकते हैं। Hare Krishna. Okay. Should we continue with questions and answers, or should we go and take prasadam? What is our plan? किसी और को कोई प्रश्न है या फिर हम प्रसाद Prasadam, दे very सकते good. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. मेरे को क्षमा करिएगा, मैं बहुत अच्छा जो है ट्रांसलेशन कर रहा हूँ।